Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my page, Science of Life with Dr. Muhammad Yousaf. And today we are going to discuss the physiology of lactation. But before that, one ayah from Holy Quran, rather a part of ayah, Surah Al-Baqarah. Surah Baqarah की आयत है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ये लैक्टेशन की आयत है, इसलिए मैंने यहाँ लगाया, ये टुकड़ा लगाया कि माएँ अपनी औलाद को 2 साल कामिल दूध पिलाएं. वलवालिदातो युर्दिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, 2 पूरे साल माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं. लिमन अरादा अन युतिम्म अर्रदाअ, जिनका इरादा दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करने का हो, वो 2 साल तक अपने बच्चों को दूध पिलाएं. तो वही हम लैक्टेशन का प्रोसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लैक्टेशन से पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट कुछ बात हमने भी डिस्कस व्हेन वी वर डिस्कसिंग द फंक्शंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन फीमेल, वी वर डिस्कसिंग द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट. वही जरा कंटिन्यू करेंगे. दैट इज द ब्रेस्ट डेवलपमेंट बिगिंस एट प्यूबर्टी when secondary sex characters appear. Breast development is the secondary sex characters of female, that is estrogen and progesterone production in each ovarian cycle affects the development of the breast. And the what is that? Stromal tissue proliferates, then the adipose tissue proliferates, and there is deposition of the fats in the adipose cells, and their glandular tissue, they grow. That is the breast development. That is stromal proliferation, adipose cell proliferation, and laying down of the ductile system, and finally the alveoli and the lobules of the glands are formed under the effect of progesterone. So this is how the breast development occurs. Hormones responsible for this, they are estrogen and progesterone, which are secreted every month. There are cyclic variation in the female hormone estrogen and progesterone with the menstrual cycle, with the female reproductive cycle में उसमें होती हैं. But in pregnancy, these are the hormones in pregnancy. Very high level of estrogen and progesterone जो हमने discuss किया हुआ है. So very high level of estrogen and progesterone persists. उसमें तो साइक्लिक वेरिएशन है. किसी वक्त एवरी मंथ देयर आर phases when there is no both the hormones are absent during menstrual phase. There are a phase only one hormone estrogen is present, and second half में both the estrogen and progesterone are present. फिर वो खत्म हो जाती है साइक्लिक वेरिएशन. लेकिन प्रेगनेंसी में there is constant increase in estrogen and progesterone, and both have got the effect on the breast development. breast पे उसका effect होगा. Plus human chorionic somatomemotrophic hormone that also contribute toward the final preparation of the breast, final development of the breast for the proper lactation. So the human chorionic somatomemotrophic hormone, ये दोनों हार्मोन भी, human chorionic somatomemotrophic hormone भी, so all will lead to the development of the breast. Now functions of the estrogen we have discussed. जल्दी जल्दी हम गुजर सकते हैं. We know that the ductile system is laid down even in non-gravid female due to the estrogen. वो जो हमने secondary sex character में discuss किया था ना, ductile system is laid down from जो ओवरी से estrogen आ रही है, and very high level of estrogen in pregnancy that causes more laying down of that ductile system, further growth of the ductile system, branching of this ductile system, and the stromal cell proliferation and deposition of the fat, all that will occur in pregnancy. हर वक्त मौजूद है. And there is contribution. Growth hormone is required, prolactin is required, cortisol is required, insulin is required. All rest of the maybe general hormone, they do contribute for the, for example, growth hormone is required for the protein synthesis in the proliferation of the cells, and the insulin is required for the proper metabolism. Cortisol का अपना role है. So many other general hormones are also required along with the estrogen and progesterone. And progesterone की function हमने discuss. This is responsible for the further proliferation plus budding of the alveoli and lobules of the glands. They from the ducts and formation of the lobule. ये function हमने discuss किया हुआ है in the progesterone. So progesterone causes formation of lobule, and these are collectively known as secretory changes. जो हमने एंडोमेट्रियम में भी secretory changes के नाम से देखी थी, and that is secretory changes, they are comparable to the effects of the progesterone in the endometrium.
उसी तरह की हैं. So this is breast. So these are the lobules and lobules. This is the progestin के function है. Duct system is laid down by the estrogen, and the lobules are the budding of the lobule occur because of the progestin, and there is fat deposition. ये सारी fatty tissue है which is deposited in the breast. So this all the ducts are they are converging on the nipple. ये भी अभी हम जिक्र करेंगे. Converging on the nipple, so the alveoli and ducts, they are converging on the nipple. So this is again a diagram of the breast and the and enlargement of this is that lobule and milk. These are the cells which are secreting the milk. Histology आपने पढ़ी होगी. So all this is because of the estrogen and progesterone. Now initiation of lactation required, milk secretion require this hormone. Estrogen and progesterone, they cause the development of the breast, but they inhibit the actual lactation process. Actual milk secretion is inhibited by the estrogen and progesterone. Milk secretion is caused by the prolactin. The placental lactogen, placental prolactin जो हम उसका नाम ले लें, that tends to secrete the milk, but presence of very high level of estrogen and progesterone throughout the pregnancy, this inhibits the milk secretion. So there is no milk secretion throughout the pregnancy. So a small amount of colostrum, थोड़ा सा milk produce होता है. Colostrum की सूरत में pregnancy में milk नहीं produce होता. So function of prolactin causes milk secretion. वो कब होगी? जब baby has been delivered, estrogen, placenta has been delivered, there is no estrogen and progesterone. तब ये prolactin काम कर सकेगी. Otherwise, presence of estrogen and progesterone, prolactin भी milk secrete नहीं करवा सकेगी. So the prolactin production starts at 5th week of the pregnancy. Start तो हो जाती है, लेकिन presence of estrogen and progesterone उसको काम नहीं करने देती, and continues to increase for rest of the pregnancy. वो भी produce हो रही है. That contributes for the proper development of the breast as well. Milk secretion तो उसका काम है, लेकिन development of the breast कर सकती, milk secretion नहीं कर सकेगी. So hormones, chorionic somatomammotropic hormone also contributes, also is lactogenic, also causes the more development as well as the milk secretion को कर सकती है. But ये बट आ गया. That is the estrogen and progesterone inhibit actual milk secretion. दोनों हार्मोन मौजूद हैं. Placental lactogen, that is the human chorionic somatomammotropic hormone, and the lactogen from the pituitary, both are increasing. Lekin they cause the development of the breast, but no milk secretion because estrogen and progesterone they inhibit. Only a few ml per day secretion in pregnancy अगर थोड़ा सा दूध पैदा हो सकता है, वो उसको this secretion is free of fat. हाँ, वो होता है, उसमें फैट नहीं होते, वो मिल्क भी नहीं होता. वैसे तो मिल्क में फैट होता है, माँ के दूध में फैट्स होता है. So fat and concentration, proteins उसमें and lactose. So this secretion is free of fat and concentrated with protein and fat. Lactose उसमें खूब होता है और fat नहीं होता. उसको colostrum कहते हैं. That is colostrum. That is rich in antibodies as well. Antibodies are secreted. तो breastfeeding में ये जो colostrum की feeding है, that is very important for the baby. उसमें antibodies भी हैं. That imparts passive immunity to baby. So colostrum is very rich in antibodies and imparts passive immunity against many organisms. So वो mother की antibodies बच्चे को मिल जाएं तो उसको immunity मिल जाएगी. So initially after parturition, डिलीवरी के बाद, that is the estrogen and progesterone levels fall because placenta is gone, वो खत्म हो गए, and the prolactin now causes milk secretion. अब जो prolactin मौजूद है, that is being secreted, that causes milk secretion in next 1 to 7 days. जल्दी शुरू हो जाती है, 2 दिन लग जाते हैं, 4 दिन लग जाते हैं, और estrogen progesterone के level कम होते होते maybe 7 days तक proper copious milk secretion starts. Other maternal hormones like growth hormone, parathyroid hormone, cortisol, insulin, they are also required for the proper milk secretion. कैल्शियम भी सप्लाई करनी है, प्रोटीन भी सप्लाई करनी है, फैट भी सप्लाई करनी है, और एटसेट्रा. प्रॉपर मेटाबॉलिज्म भी मेंटेन करना है फॉर ऑल दिस प्रॉपर फंक्शन. सो द मेनी अदर हार्मोन, जनरल हार्मोन्स आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर दिस. विद इन अ फ्यू वीक्स प्रोलैक्टिन लेवल विल रिटर्न टू द बेसल लेवल. ये प्रोलैक्टिन पहले बहुत ज्यादा था, अब प्रोलैक्टिन लेवल कम हो गया. दिस प्रोलैक्टिन
cyclic variations occur in the prolactin secretion after that. वो कैसे? That is the suckling stimulation on the breast. Baby जब दूध पीता है, this causes prolactin production. ऑक्सीटोसिन प्रोडक्शन भी करता है यही सकलिंग स्टिमुलेशन, बेबी जब माँ का दूध पीता है, एंड इट कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन एज वेल एज प्रोलैक्टिन. So prolactin, breast feeding causes stimulation of the prolactin secretion. अभी हम prolactin की बात कर रहे हैं, ऑक्सीटोसिन की बात आगे आ रही है. Both hormone they are stimulated by the suckling stimulation on the breast nipple areola. यहाँ से sensation जाती हैं, कैरी होती हैं, and they cause the secretion of prolactin and the secretion of oxytocin. So the suckling by the baby leads to signals to the hypothalamus and inhibition of PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन. एंडोक्राइनोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया था, मेरे लेक्चर अगर आपने सुने हैं तो. प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन प्रोड्यूस फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. ये जो सकलिंग स्टिमुलेशन कॉजेज इनहिबिशन ऑफ प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन. जब वो विथड्रॉ हो जाएगी, प्रोलैक्टिन विल बी रिलीज एंड द प्रोलैक्टिन 10 to 20 fold इंक्रीज अकर्स एंड दिस प्रोलैक्टिन विल प्रोड्यूस मिल्क फॉर दी सब्सिक्वेंट. अभी तो बच्चा दूध पी रहा है, पहले से तैयार किया हुआ. अब ये जो प्रोलैक्टिन पैदा होगी नेक्स्ट फीडिंग के लिए, दिस विल कॉज द प्रोलैक्टिन सिक्रीशन एंड मिल्क सिक्रीशन फॉर द नेक्स्ट फीडिंग. एंड द विदाउट ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट स्टॉप प्रोड्यूसिंग मिल्क विद इन 1 to 2 weeks. अगर माँ अपने बच्चे को दूध ना पिलाए, इस साइकिल को आप जारी ना रखें, देन द मिल्क सिक्रीशन स्टॉप, क्योंकि प्रोलैक्टिन तो खत्म हो जाएगी. प्रोलैक्टिन इनहिबिशन, ये सकलिंग स्टिमुलेशन प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को कंटिन्यू करेगा. अगर सकलिंग स्टिमुलेशन नहीं है, विद इन 1 to 2 weeks 3 weeks में प्रोलैक्टिन बिल्कुल जीरो पे हो जाएगी, वही प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन हावी हो जाएगी, एंड देयर विल बी नो प्रोलैक्टिन सिक्रीशन, मिल्क सिक्रीशन नहीं होगी. इसलिए वेरी अर्ली डिलीवरी के बाद बच्चे की फीडिंग इज मस्ट फॉर दी इनिशिएशन ऑफ दिस प्रोलैक्टिन सिक्रीशन साइकिल, इसको ऑन करने के लिए. तो एंड कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग अगर करे एक माँ 2 साल, अभी हमने अल्लाह पाक का फरमान 2 साल वाला पढ़ा है, अगर माएँ दूध पिलाती रहें 2 साल से भी ज्यादा, ये प्रोलैक्टिन साइकिल मे कंटिन्यू फॉर 3 years 4 years many years. ये पॉसिबल है. दैट इज प्रोलैक्टिन फीडिंग इज ब्रेस्ट फीडिंग इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग मिल्क सिक्रीशन फॉर ईयर्स. ये तो 2 साल बाद रोक दिया तो रोक गया, वो तो अल्लाह पाक का हुक्म है 2 साल. अदरवाइज अगर ये ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू की जाए, मिल्क सिक्रीशन में कंटिन्यू फॉर मेनी इयर्स एज वेल. तो दिस इज हाउ द प्रोलैक्टिन साइकिल है. ये दिस इज रेड वन इज प्रोलैक्टिन. ये तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की बात कर रहे हैं ना, वो तो कम हो गए प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद. ये डिलीवरी है, पार्चुरेशन का टाइम ये है, डिलीवर हो गया, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो वेरी हाई थे, प्रोलैक्टिन भी हाई था, बट देयर वाज नो मिल्क सिक्रीशन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज 2 हार्मोन. अब ये दीज 2 हार्मोन दे हैव गॉन टू 0 लेवल, प्लेसेंटा डिलीवर हो गया, बट प्रोलैक्टिन सिक्रीशन इज देयर. उसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से साइकिल एक ऊपर नीचे फीडिंग करेगी, प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाएगा, छोड़ेगी, कम हो जाएगा. सो देयर आर साइक्लिक चेंजेस. दिस मे कंटिन्यू फॉर इयर्स. अगर उसको दूध पिलाती रहे तो इट मे कंटिन्यू फॉर इयर्स. तो हाइपोथैलेमिक कंट्रोल तो हमने पढ़ा हुआ है, उसको दोबारा जिक्र कर देते हैं. प्रोलैक्टिन सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन PIH व्हिच इज अ डोपामीन. वो है क्या? सिंपल कम डोपामीन है, व्हिच इज कांस्टेंटली प्रोड्यूस्ड एंड प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन में भी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन भी हो, उसको रिलीज करें. सकलिंग स्टिमुलेशन causes reduced PIH and it causes more production of the prolactin releasing hormone. अगर रिलीजिंग हार्मोन भी हो, एंड दिस विल कॉज द मिल्क सिक्रीशन फॉर नेक्स्ट फीडिंग के लिए मिल्क सिक्रीशन. PIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन इज डोपामीन, पहले मैंने जिक्र कर दिया, ये है सिंपल कंपाउंड है, डोपामीन है. सो सप्रेशन ऑफ द ओवेरियन साइकिल, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द नर्सिंग. यानी माँ अगर बच्चे को दूध पिलाएगी तो ओवेरियन साइकिल इज सप्रेस्ड. उसको एमेनोरिया होता है, बहुत उसको कहते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया. लैक्टेशनल एमेनोरिया 50% ऑफ द नर्सिंग मदर हैव द लैक्टेशनल एमेनोरिया, यानी उनके फीडिंग के दौरान उनको मेंसेस नहीं आते. 50% एटलीस्ट 15%, मतलब नेचुरल वे ऑफ द गैप बिटवीन द प्रेगनेंसीज.
उसको मेंसेस ही नहीं होंगी, ओव्यूलेशन नहीं होगी, नेक्स्ट प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होगी। सारी औरतों को ऐसे नहीं होता, लेकिन 50% को तो ऐसे होता है कि लैक्टेशनल एमेनोरिया, दूध पिलाने वाली माओं के बच्चों में गैप खुद ब खुद पैदा हो जाता है। अल्लाह पाक ने ये निजाम रखा, 2 साल दूध पिलाएंगे में भी उसका लैक्टेशनल एमेनोरिया काफी लंबा परसिस्ट कर दे। So 50% of the nursing mother have lactational amenorrhea. There is no menstrual cycle, there is no ovulation. Without ovulation, pregnancy is not possible. So pregnancy is not there. So the suckling signals, this suppresses the gonadotrophic. इसका काज क्या है? ये suckling stimulation प्रोलैक्टिन सिक्रिएट कर रही है। अगली स्लाइड पर फिर जाएंगे। ऑक्सीटोसिन भी रिलीज कर रही है, 2 हार्मोन रिलीज करती है, बट इट इनहिबिट्स द गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, यानी जो द हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर द रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उन दोनों को रिलीज करने वाली हाइपोथैलेमिक हार्मोन ये है गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, उसको इनहिबिट करती है। तो ये सकलिंग स्टिमुलेशन। सो दिस प्रोलैक्टिन भी, प्रोलैक्टिन खुद भी इनहिबिट करती है, सकलिंग स्टिमुलेशन भी इनहिबिट करती है, और प्रोलैक्टिन भी गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन को भी इनहिबिट करती है। इसलिए आप देखेंगे आगे बाद औरतों के जिनके बच्चे ना हों, उनकी इन्वेस्टिगेशन में एक इन्वेस्टिगेशन ये भी होती है ब्लड का प्रोलैक्टिन लेवल। बाद औरतों का प्रोलैक्टिन लेवल, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया उसको कहते हैं। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया काजेस इनफर्टिलिटी। वो क्यों? कि हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इनहिबिट्स दिस गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। जब ये नहीं होगी, दैट इज एफएसएच और एलएच नहीं होगी, स्पेशली एलएच का सर्ज चाहिए, दैट इज फॉर ओवुलेशन। सो ये नहीं होगी, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ना हो तो उसमें ओवुलेशन नहीं है, प्रॉपर एंडोमेट्रियल साइकिल नहीं होता, तो उनको इनफर्टाइल होते हैं, उनके रेगुलर साइकिल भी खराब होते हैं जिनको हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो। सो एब्सेंस ऑफ गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये इसके कमी की वजह से बोथ हार्मोन्स एफएसएच एंड एलएच दोनों कम हो जाएंगी। देयर विल बी नो ओवुलेटरी साइकिल, या एटलीस्ट ओवुलेशन तो नहीं होगी ना, वो सर्ज चाहिए, वो नहीं होगी तो दैट विल कॉज दी नो मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड दिस विल लीड टू नेचुरल वक्फा। दूध भी पिलाते हुए नेचुरल वक्फा भी हो जाएगा। अगर प्रोलैक्टिन ज्यादा है तो दैट विल कॉज इनफर्टिलिटी। अडॉप्टेशन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? वैसे तो 50% ऑफ द मदर में लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है, लेकिन अगर वो दूध पिलाती रहें तो फिर आस्ता आस्ता उनकी बॉडी अडॉप्ट कर जाती है। ये सकलिंग स्टिमुलेशन फिर उसको वो काम नहीं करती, उसके मेंसेस शुरू हो जाते हैं। अडॉप्टेशन आफ्टर अ फ्यू मंथ, कुछ मंथ तक तो उसको एमेनोरिया होगा, लेकिन फिर उसको दूध पिला भी रही है, फिर उसको मेंसेस शुरू हो सकते हैं, अडॉप्टेशन होती है। अब आखिरी आ जाए चौथी हार्मोन। चौथी हार्मोन ने कैसे? चौथी हार्मोन तो कैसे हैं? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन, और ये चौथी इसलिए। अदरवाइज ह्यूमन कोरियानिक सोमैटोमेमोट्रोफिक हार्मोन भी है, ग्रोथ हार्मोन भी है, पैराथायरॉइड हार्मोन भी है, कॉर्टिसोल भी है, इंसुलिन भी है, सारी हार्मोन ब्रेस्ट पे एक्ट कर रही हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो काम ब्रेस्ट के लैक्टेशन के लिए है वो ये 4-5 इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो इजेक्शन ऑफ मिल्क, बच्चा पिएगा कैसे? दैट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। वो ऑक्सीटोसिन का काम है, दैट इज, उसको हमने पढ़ा था, अगर आपने मेरे लेक्चर सुने हुए हैं एंडोक्राइनोलॉजी वाले, उसमें आई हैव डिस्कस्ड द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। दैट इज, दिस विल लीड टू सकलिंग स्टिमुलेशन, causes signals through the spinal cord to the hypothalamus, and it causes the secretion of oxytocin. And oxytocin का क्या it causes the ब्लड में आके, इट causes the contraction of myoepithelial cells around those alveoli। अभी जो डायग्राम ने alveoli देखे थे, उनके अराउंड देयर आर मसल सेल्स, myoepithelial cells, एक्टिन एंड मायोसिन वाले सेल्स हैं, which cause the oxytocin release, and the contraction of the myoepithelial cells occurs and it causes the expression of the milk. जब there is contraction of those myoepithelial cells, it causes the squeezing actions on the alveoli, and there is milk is ejected into the ducts which are converging on the nipple. So the let down of the milk, this is known as let down of the milk, ejection of milk, this is known as. So stimulation and inhibition of oxytocin and milk ejection, that is stimuli for oxytocin। ये तो एक suckling stimulation है, और भी stimuli हैं। और stimuli क्या है? Suckling sensation from the breast, ये तो हो गया। Crying of the baby, crying of the baby also causes the release of oxytocin। बेबी रो रहा हो तो माँ को दूध आ जाता है,
because crying of the baby also stimulates the production of oxytocin, and fondling of the baby, माँ के साथ जो fondling of the baby also causes the maternal milk secretions, and in sexual orgasm there is the release of oxytocin, and uterine cervical stretch or irritation भी हो सकती है. This causes the release of oxytocin, and oxytocin release may be inhibited कैसे हो सकती है? My psychological factors and the anxiety and tension and other conditions of generalized sympathetic stimulation, this may cause inhibition of the this oxytocin. And that's all about the lactation process हमने discuss कर लिया. So next inshallah ताला we are going to talk about something about the neonatal physiology. हम इसको end करेंगे. Please do share and subscribe, और next time inshallah hope to see you next time. Thank you very much.